very important one more topic in that topic only regarding worshipping of the host of heaven. Anybody knows what I am saying? Worshipping of the host of heaven. Anybody knows host of heaven? Host of heaven म्हणजे जे कितें सरकारान हा पळय स्टार सन मून stars chandra surya taro tar. We'll see what God has to say about worshipping all these sun moon stars. Okay, we'll see Deuteronomy 17:1. Deuteronomy 17:1. Thou shalt not sacrifice unto the Lord thy God any bullock or sheep wherein is blemish or any evil favoredness, for that is an abomination unto the Lord thy God. Thou shalt not sacrifice unto the Lord thy God any bullock or sheep wherein is blemish. So what is blemish? Blemish is defect, okay, and any evil favoredness is evil favoredness is kind of, like which has been hurt, any goat, sheep which has been hurt, it is defective only. For it is abomination. For abomination it is disgusting unto the Lord. So when you sacrifice unto the Lord, you have to sacrifice a non-defective animal. It has to be without blemish, without any defect. So if they be found among you within any of thy gates, which the Lord thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the Lord thy God, in transgressing his covenant. Now he's saying, if they be found among you within any of thy gates, which the Lord thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought means that hath done. Wickedness in the sight of the Lord thy God, in transgressing is turning away. From his covenant. And hath gone and served other gods and worshipped them, either the sun or the moon or any host of the heaven, which I have not commanded thee. Okay, host is any mass. Host म्हणजे कितें? There are so many stars, there is dust in the outer space, there is dust, there are stars, there are all kinds of things. Host is representing to anything, is not to be worshipped. What the Lord thy God said, which I have not commanded thee. खोड असलेले गोरू मेंढरू शरेशभरा भेटवू नका. ताका ही मांदो नाक. तुमच्या मधल्या कोणूय दादल्यान व बायलेन दुसऱ्या देवाची सेवा पूजा व सूर्या मागीर आणि चंद्रिमान आणि नकेत्रां खंयच्याय शहरात मान नमस्कार दिला आणि हे परी शरेशभराचो करार मोडला म्हूण आकाशात झाल्या. 3 परी. प्रभु अपने ईश्वर के लिए कोई ऐसा बछड़ा या भेड़ मत चढ़ाओ जिसमें कोई दोष या बुराई हो. यह प्रभु तुम्हारे लिए ईश्वर की दृष्टि में घृणित है. यदि तुम्हारे किसी नगर में जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम्हें देने वाला है, कोई ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री हो जो तुम्हारे ईश्वर के विधान का उल्लंघन करते हुए ऐसा कोई काम करे जो प्रभु को अप्रिय है, जो पराये देवताओं की पूजा करता है या सूर्य चंद्र और आकाश किसी अन्य, जो पराये देव देवताओं की पूजा करता है या सूर्य चंद्र और आकाश के किसी अन्य नक्षत्र को दंडवत करता है. करो हो गए इतने हैं.
3 रीड्स वेल ना, अच्छा पढ़ रहा है. ओके, एनीबडी हिंगा कोणाक मराठी बाइबल, हिंदी बाइबल किसको चाहिए? हिंदी बाइबल, मराठी बाइबल, कोंकणी बाइबल ते तुम्ही ऑलरेडी हा दिसता. किसको हिंदी बाइबल, मराठी बाइबल? हा, कोण ना? ओके. सो हांगा कितें म्हणटा? Yeah, what it's saying? Don't worship the sun, the moon, the stars. 17:4-7, and eat be told thee that thou hast heard of it, and inquired diligently, and behold, it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel. Meaning, here it is saying, if anybody has told you such a thing is being done in Israel, आता कोणे तुका येवन सांगला हो हे कोण कोत्ता, then see. Then thou shalt bring forth that man or that woman which hath committed that wicked thing unto thy gates, even that man or that woman, and thou shalt stone them with the stones till they die. At the mouth of 2 or 3 witnesses shall he that is worthy of death be put to death, but at the mouth of 1 witness he shall not be put to death. Meaning here what is saying, if supposing anybody has seen, ये बाद में हिंदी में जब वो पढ़ता है तब देखते हैं हम. Anybody has seen, आता say Jocelyn is worshipping sun, moon, earth. I came to know. Jocelyn, I come to the congregation of Israel and tell that this fellow is worshipping. We bring him in the middle, we stone him to death. At the witnesses, 2 witnesses, not only I and somebody else has seen him worshipping. We call him, put him in the middle and stone him till he dies. Now if there is one more witness, there is another witness, say Hanky comes and says, no, he was not worshipping, then he will live. With the witnesses, only then he shall be put to death. Now see, the hands of the witnesses shall be first upon him to put him to death. Means those people who saw him, they will be first people to take the stones and hit him. And afterwards the hands of all the people. So shall thou put the evil away from among you. What is happening now? As I told you all before, there was no solution to the problem. Yeshua was not in the scene. Jesus was not come in the scene. This is old covenant. Jesus was not, there is no solution. Sin, this guy has sinned. Evil is there. So if evil is there, what will come? Curse will come. Now how you do away with that curse? You kill that fellow. Because if that fellow you keep alive, he will spread it to you. You will do same thing. After few months, he will do it. After few days, he will do it. Evil will spread over all. Contagion it is. So what do you do? No solution to the problem. The only solution is finish him off. So what I am showing you here, the severity of sin. God is still dealing with sin. He is not accepting sin even now. That sin was put in Christ's body on the cross. Sin is still been. If you people are still sinning, sin has its consequence even till date. You may not be condemned. You might have accepted Christ, Yeshua, and now your ticket to heaven, all that. But you will be afflicted like the unbeliever. So what is the difference? Only you will not be condemned. You will not go to hell. But you are still afflicted. What he is going through, you are also going through. The same. It is not a curse but an affliction to you. For him it is a curse because he doesn't have eternal life. But the same scenario. Why it is all happening? Because sin is there still in your life. So sin is to be dealt with. Sin is going to come after you. This is what I want to tell you. तो 17 पहला वो पढ़ो बाद में हिंदी में बोलो. और जब यह बात तुम्हें मालूम हो जाए तो यह बात मालूम हो जाता है तो क्या करने का? अभी ये जो आदमी ने सूर्य चंद्र को पूजा किया, अभी तुम लोगों से एक से पता चला ये ऐसा कर रहा है, अभी क्या करने का देखो. इस बात की ठीक ठीक जांच करोगे. हाँ, बाद में आगे. तब यदि यह सत्य प्राणित हो जाए कि ऐसा कुकर्म इस्राएल में किया गया, तो इस कुकर्मी पुरुष या स्त्री को फाटक के बाहर ले जाएंगे और उस पुरुष या स्त्री को बाहर किधर लेके जाए? उधर उसको श्राप मान नहीं सकता है. वो पवित्र है, वो जगह वो
परमेश्वर है उसको बाहर लेके जाए, अभी उसको मारना है, उधर नहीं मार सकता है, वो गंदा है चीज, उसको उधर लेने का अभी क्या करता है देखो। उस पुरुष या स्त्री को पत्थरों से मार डालोगे। हाँ, मार डालोगे पत्थरों से। केवल 2 या 3 साक्षियों के आधार पर किसी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। एक साक्षी के आधार पर किसी को प्राणदंड नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहले साक्षी उसे मृत्युदंड देने के लिए अपने हाथ उठाए, उनके बाद अन्य सब लोगों का। इस प्रकार तुम अपने बीच से ऐसी बुराई दूर कर दोगे। हाँ, लास्ट पढ़ो, क्या हो जाएगा बाद में? इस पत्थर प्रकार हाँ तुम अपने बीच से ऐसी बुराई दूर कर दोगे। हाँ, बुराई दूर कर जाएगा। नहीं तो अभी ये क्यों दूर करना है? क्योंकि ये पाप आया तो श्राप आता है, पाप के साथ ये श्राप नहीं जाएगा, ये श्राप आएगा तेरे पीछे। तो अभी द डिफरेंस बिटवीन अ born again and a non born again, both are getting afflicted, but who is not born again, who doesn't know Yeshua, is not guaranteed eternal life. That's the only difference. But in this life you are both getting the same consequences. Sin is still coming after you. ये जो चंद्र सूर्य सबका ये पूजा करता है उसको, तो ये टॉपिक चंद्र सूर्य मेनली है, तो ये बस। आता हमें ये सब क्यों मैं पढ़ रहा है? Moses knew the ways of God. God showed Israel what his acts. So अगले चमत्कार सब देखा इजराइल लोग ने, कुछ बदला नहीं। मोजिस को क्या? He showed him his ways. I'm showing you the ways of God. This is the Father's way. What Yeshua came to do. अभी हम यशुआ कैथलिक सब बोल रहे हैं। यशुआ किसके लिए आया? He is the way, the truth and the life. Way to whom? The Father. So where is taking you to the Father? This is the Father's ways. I am showing you what is the Father's ways. So you understand the Father. Sin is still to be dealt with. It is gone on the cross, but you're still, if you're sinning, that consequence is still there. So yeah, पोतून वाचते फुल. आणि याची बारकायेन आणि निगूत चौकशी करत आणि खरेंच असले कर्तृत्व घडला जाल्यार ह्या मनशाक फातरावर मारात. पूण त्या आधी दोगा तरी जणांची गवाही गरजेची, एकल्याची पुरो न्हय. आणि तांकां मारूं नजो. त्या गवायनी पहिले फातर मारचे. ते गवायनी पहिले फातर मारचे, मागीर हेरांनी. हे परी तुमचे मध्ये असले खोटेपण पुसून येतले. ते खोटेपण पुसून कितें जालें लास्ट मत? हे परी तुमचे मध्ये असले खोटेपण पुसून येतले. मागीर ना जाल्यार ते अजून आहा, ते पुसून वसोंक ना, ते अजून आहा ते. तो ये आप क्या समझेगा बाद में, नीचे जाएगा देखते हैं। ये जो पेपर में पढ़ते हैं ना, वो आगे जाता है, वो हॉरोस्कोप बोलता है, कैंसर, टॉरस, एरीज, वो देखता है क्या बोलता है परमेश्वर। हम लोग देखते हैं ना, पेपर लाता है सुबह सुबह, आज क्या दिन मेरा अच्छा है, गुड लक, बैड लक, क्या लक है, वो देखते हैं इधर क्या बोलते हैं। ओके, 2 Kings 23:5। 2 Kings 23:5. Okay, I'll read. And he put down the idolatrous priest whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places, in the cities of Judah, in the places round about Jerusalem. Them also that burned incense unto Baal, to the sun, and to the moon, and to the planets, and all the host of heaven. Now I'm reading slowly. Those who are English, listen carefully. There is a lot to say. And he put down the idolatrous priest. These priests were worshipping idols, whom the king of Judah had ordained to burn incense. Means the king, there was one king, good king, then next generation some bad king, worshipping all idols. Then the third king came, good king. Like that Israel was always fluctuating because of the leader. One king was worshipping idols, other king came and broke all the idols, third king comes, again worships idols, the same rotation. So now this is an idolatrous. Now see, and he put down, now this good king came, he put down the idolatrous priest, whom the kings of Judah had ordained to burn incense in the high places. High places, mountains, always mostly pagan worship.
They need height, mountains, hills, the high places in the cities of Judah and in the places round about Jerusalem. And they burned incense unto Baal. Baal is a god. Baal is a Phoenician deity. Okay, it is from it's a god worship, a pagan god worship. To the sun and to the moon and to the planets. Now these planets are what we'll see. English is saying planets, but in the Hebrew it is called mazala. Okay. Now what it says is to the stars, the constellation, a group of stars. Okay. It says to the zodiacal sign. Zodiacal sign is zodiac. Zodiac. आम्ही पळयता न्हू झोडॅक टॉरस एप्रिल टू दीस युअर टॉरस ना जाल्यार मार्च समथींग युअर कॅन्सर आनी कितें कितें कोणाक हू नोज वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट हू नोज वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट ऑन द पेपर्स इट कम न्हू टॉरस आम्ही वाचता न्हू ते पेपर टॉरस हे भविष्यवाणी क्या बोलताय वो ये रे एनिमल्साचे चित्र आहा पळय टॉरस या हा हय मे बी हॉरिस्कोप म्हणटा तेका या स्कॉर्पियन ते सगळे आम्ही वाचता न्हू ते आता हे पळय हे प्लॅनेट्स इन द हिब्रू इज कॉल्ड झॉडिकल सायन एनीबडी डुईंग दिस इज झॉडिकल सायन इज पेगन वर्शिप हे प्लॅनेटाचे नाव कोणे दिला हू गेव ऑल दीस प्लॅनेट्स नेम दे आर गॉड्स ग्रीक गॉड्स फिजिक्स द बेस्ट दे आर द मोस्ट इंटेलिजंट पीपल ऑल द फिजिक्स अल्फा ओमेगा बीटा गामा ऑल द रेज ऑल दे आर ग्रीक पीपल हू दिस they are gods. Jupiter, Mars, Saturn, they are all gods of the Greeks. So here the zodiacal sign and all this, where it is coming from, they are all their thing worshipping. And now we are seeing on the paper zodiacal sign. Astronomy is good, not astrology. Astronomy is the stars. God says the heaven declares the glory of the Lord. The firmament showeth his handiwork. You have to see the stars. He will tell you, look at the stars, it is glorifying me. Yes, the star, the sun, everything glorifies him. That is astronomy, study of the planet. Beautiful how he's designed the whole world, the whole universe. But not astrology. Astrology matlab kya? What is astrology? Means you're predicting, this thing is predicting your future. These things don't predict your future. God predicts your future. These signs don't predict your future. Your destiny is in God's hand. So this becomes idolatry, idolatrous worship. Okay, now let's see if I can see in Hindi what I can. ये तुम पेपर पे पढ़ते हैं ना, वो गाय का, वो स्कॉर्पियन का, वो सब श्राप है करने के लिए. इधर मना किया है भगवान ने. ये पहले से तुम्हारे धर्म से नहीं आया, पहले से ये चालू है, ये रेपिटेशन. जुदाच्या नगरात आणि जेरुसलेमच्या शेजाऱ्या वाट्यानी जाका उंच पूज्य स्थानाचे यज्ञ भेटवून जुदाच्या राजान नेमलेले त्या बनावट यादिकांत ताणे जीवेशी मारून उडयले. तेच परी जे बालक सूर्याक चंद्राक आणि बालक म्हणला ते बालक ओके ते बाल एक देव हा त्यांचो बालक केला ते इट ऑल कम्स फ्रॉम द सन गॉड वर्शिप is Lord going in Catholicism also. You look, pay attention in your church when you go next time. You see any son, no, you'll come to know what I'm talking. I don't want to go into that because it may just hurt like sentiment because you're not in that. You don't know. See, if I have to tell you something, I have to first give you knowledge of what, then you will understand. Through knowledge comes understanding. If you don't have understanding, I just throw something, you will take it as, it will hit you and come backfire on me. It is all, the whole thing is a pagan worship. ते परी जे बाळाक सूर्याक चंद्राक आणि सर्गीच्या अख्ख्या दरबाराक आणि मेकळ्याक उजांक यज्ञ भेटयताले तांकां एकूच सांगलेले पोतून जुदाच्या नगरात आणि जेरुसलेमच्या शेजाऱ्याच्या वाट्यांनी जाका उंच पूज्य स्थानाचेर यज्ञ भेटवून जुदाच्या राज्यान नेमलेले त्या बनावट याज्ञिकांक ताणे जिवेशी मारून उडयले. तेच परी जे बालक सूर्याक
वय वाच सूर्याक चंद्राक आणि सर्गीच्या अख्ख्या दरबाराक आणि नेकराताक पूजांक यज्ञ भेटयताले तांकां जिवेशी मारले. उसने उन मूर्तियों के पुजारियों को हटा दिया हाँ वो अभी राजा अच्छा राजा था, भगवान से ये करता था, उसे प्रेम करता था, तो ये सब हटाया वो सब. जिन्हें यूदा के राजाओं ने नियुक्त किया था और जिन्होंने यूदा के नगरों तथा यरूशलेम के आसपास के पहाड़ी पूजा स्थानों में धूप चढ़ाई थी, और उनको भी जिन्होंने बाल देवता, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और आकाश के मंडल के समाप्त तारों को धूप दी थी. तो अभी जेरेमाया 8:1. Okay, Jeremiah 8:1 says, "At that time, saith the Lord, they shall bring out the bones of the kings of Judah." See, now what he's saying, these kings are dead. They shall bring out the bones of the king of Judah, and the bones of the princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophet, and the bones of the inhabitants of Jerusalem out of their graves. Here it is never said like this, but why he is telling them to bring out? And they shall spread them before the sun and the moon and the host of heaven, whom they loved, whom they have loved, and whom they have served, and after whom they have walked, and whom they have sought, and whom they have worshipped. They shall not be gathered nor burned, they shall be as dung upon the earth. Dung means they shall be as manure. Let's read. हाँ पढ़ो. प्रभु कहता है, उस समय यूदा के राजा और उच्चाधिकारियों की, याजकों की और नबियों और यरूशलेम के निवासियों की हड्डियों को उनकी कब्रों से निकाला जाएगा. वे सूर्य, चंद्र और आकाश के नक्षत्रों के नीचे बिखरे दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने उन क्यों पर क्यों क्यों अभी देखो, ये राजा को क्यों निकलता है? वो मरा है, अब निकल रहे हैं उनका, और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? वो चंद्र सूर्य के नीचे डाल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं उसको. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको प्यार किया, उनको प्यार किया, चंद्र सूर्य को. उनकी सेवा और अनुसरण हाँ, की, उनको सेवा भी किया. उनसे पराक्रम किया और उनकी आराधना की. आराधना किया. इन्हें न तो इकट्ठा किया जाएगा और न दफनाया जाएगा. वे खेत में खाद की तरह पड़े रहेंगे. हाँ, लास्ट पढ़ो. वो वे खेत में खाद की तरह हाँ. पड़ी रहेगी. वो क्या बोल रहे हैं? मतलब ये लोग क्या कर रहा था? ये प्रीस्ट, यादनिक लोग, ये प्रॉफिट, न्याबी, और ये सब लोग क्या कर रहा था? वो चंद्र सूर्य का पूजा कर रहा था. ये परमेश्वर के लोग थे. हाँ, अभी भी कर रहे लोग वैसे. तो यू हैव टू क्रॉस चेक हियर God's word, whether what they are doing is what they are, or you like a blind man will follow the blind leaders of the blind. तो काळ पावतोच उलयता तो सरेसभर जुदाच्या राजांची हाडा, ताची कुवाराची हाडा, याजनिकाची हाडा. पळय पोतून वाचते कोणाचे आडा हाडपाचे भायर. आडा म्हणला बट या. तो काळ पावतोच उलयता तो सरेसभर जुदांच्या राजांची हाडा, जुद्याचे राजाचे आडा म्हणजे त्याची कुवारांची हाडा, याजनिकांची हाडा, हा याज्ञिक प्रॉफिट, आय थिंक दॅट वॉज प्रवाग्यांची हाडा आणि जेरुसलेमात रावतल्यांची हाडा त्यांच्या समाधीतली बाहेर काढतली. आणि ही हाडा सूर्याक, चंद्रिमान आणि मळबावयल्या सगळ्या नेकरांच्या मुखार पाताळावर दवरतली. कित्याक ताचो ताणी मोग केला. कित्याक मोग केला तेणे चंद्र सूर्याचे आणि चंद्रमाचो हा नेकराचा. कित्याक ताचो ताणी मोग केला, तांची सेवा केली, त्यांची सेवा केली. मागीर आणि त्याच्या फाटल्यान वचून ताची भूत घेतली हा आणि ताची पूजा केली. त्याची पूजा केली. आणि ही हाडा जमा करून उरची ना, पूण सारे जाल्ले भाशेन जमनीर पाताळतली उरतली. सो आमकां हिंगा कितें गोमन येता?
ये जो पहले से ही चल रहा था, चंद्र सूर्य नकेत्राचे पूजा करपाचे पयली सन, आता न्हू ते पयली सन चलताले. सो हांवें जेरमाया 8:3 कंटिन्युएशन. And that shall be chosen rather than life by all the residue of them that remain of this evil family, which remain in all the places whither I have driven them, saith the Lord of hosts. Now what is saying? God is saying that shall be chosen rather than life to the residue. Residue is the remaining of them that remain in this evil family, which remain in all the places whither I have driven them, saith the Lord of hosts. Now you have to understand, I am picking out verses. But what happened? No, when they were sinning in God, what He drove them to different countries. They took them as slaves. Whenever they sinned against God, the enemies attacked them, took them as slaves in their countries. They were scattered around. So here He's saying, wherever y'all have been thrown, y'all death will be chosen over life. What we want is life over death, not death over life. And then what He says? इस दुष्ट जाति के जो लोग शेष रहेंगे, जो उन सब स्थानों में जहाँ मैंने उन्हें बिखरेगा जीवित रहेंगे, वे सब जीवन के बदले मृत्यु की कामना करेंगे. सर्वशक्तिमान प्रभु की वाणी है. ज्या ज्या गावांनी हांवें ह्या लोकांक धांवडायलो त्या त्या गावांनी हे खोटे पिळगेतली जिवी उरतल्याक तांकां जिविताचे स्वातेर मरण अदीक बरें दिसतले. उलयता तो सरेस्वर. Now, हिंगा मरे एक, before I read this Horeb मरे now, Horeb is the same as Sinai. That ते हांवें तुका वाचला पळय ते पिवन नाचताले पळय थिंगा. The same is Horeb or Sinai is the same place. Okay? Now I'm reading Deuteronomy 4:15. Take heed, I'm reading 4:15. Take ye therefore good heed, unto heed is nothing but God. Take heed, pay attention, attend to. Take ye therefore good heed unto yourselves. Now this unto yourselves, is a place, I was surprised actually when I was seeing the Hebrew word for unto yourselves. It is not unto yourself just like that English. It is also called nephesh. Nephesh can also be soul or it can be mind. Okay, so it says, take heed with your mind, for ye saw no manner of similitude on the day. Similitude is the likeness. You saw no likeness on the day that the Lord spoke unto you in Horeb, out of the midst of the fire. Lest ye corrupt yourselves and make you a graven image. Graven image here is nothing but carved image. The similitude of any figure, the likeness of male or female. Now here is I am bringing more specific. थोडे जाणां मातशी confusion आसता, म्हाका कळना कसलें confusion. Exodus 20, don't worship anything in heaven, earth or under the water. Some people had problem. Here now he is giving specific. Lest ye corrupt yourself. Corrupt is ruin, damage yourselves. What is saying? You will damage your own selves and make you will corrupt. You will also, it says corrupt is kind of, you will spoil, you will perish, you will waste yourself. And you will make graven images, the similitude, the likeness of any figure
Figure, what is figure here? Any similarity. You will make any similarity, any figure. अंडा. The likeness of male or female. Here I am giving you specific likeness of male or female. जिस समय प्रभु ने हेरो पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी, इसलिए सावध रहो, तुम नष्ट न हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ। हाँ, वापस पढ़ो। अपने प्रकार से कोई मूर्ति नहीं बनाओ। नहीं बनाओ। तुम भ्रष्ट न हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ, न किसी पुरुष न किसी स्त्री की। नहीं, न किसी पुरुष न किसी स्त्री की मूर्ती. कोणसा बी मूर्ती मत बनाव. कोणसा मतलब कोणसा आमच्या हांगा संताचे हा मरे मूर्ती तिथून येता मरे मुनीस मरे तो. हियर इज गिविंग प्रॉपर डिस्क्रिप्शन. I mean, this is the word of God. The Bible म्हणता heaven and earth shall pass away, my word shall not pass away. Don't tell me some religious system comes and passes, abolishes this word of God. So now वापस पढ़ो. वो last 16 पढ़ो. कोणाक ये हाँ जाल्यार I am coming specific. ये आकाश में उनको समझ में नहीं आता है बहुत लोग को. यहाँ आकाश में इधर उधर नमस्कार मत करो, मूर्ति मत बनाओ, उनको इतना ध्यान नहीं आता है. ये no understanding they have because their hearts are darkened. Now I am coming and giving you specific what God is saying. तो मुनीस दिसता जाल्यार हिंगा येता तो, हे कॅटेगरीन येता तो. आणि तुम्ही मूर्तीचे पूजा करता जाल्यार पळय हिंगा मागीर कितें जातले, पातोक येतले. पातोक येयला तो कितें येतले, श्राप येतले. आनी मागीर तुम्ही देव देव म्हणटा हिंगा उजो पेट्टा फाटल्यान. तुम भ्रष्ट न हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ, न किसी पुरुष न न किसी किसी स्त्री पुरुष की। न किसी स्त्री. सिनाय डोंगरार हा सिनाय येला हय न्हू. ते हॉरेब एंड सिनाय इज द सेम थिंग. सिनाय डोंगरार हिंगा हॉरेब दिलं. द सेम थिंग, इट इज द सेम माउंटन. Which is this mountain which I said where they were dancing, they naked and all, that is the same mountain. सिनाय डोंगरार उज्यातान सरसभर तुमचेकडे उलयलो उलयलो. तेन्ना तुम्ही त्याचे रूप पळोवंक ना. हम्म. तुमच्याच बऱ्यांक त्या पासत भाच्या लिबान तुमकां मूर्ती रूप पळोवंक घेवू नाकात. दादल्या जावं बायलेचे, मनजातीचे जावं पाखराचे. म्हणजे हांगा कितें म्हणूंक सोदता तो, तेन्ना देवान उलयलो, तुवें तेजें रूप पळयला. तो एक उज्याच्यान येयलो आणि तो इन द क्लाउड ऑफ पिलो. डिड यू सी एनी रूप देखा आपने किसी ने? ये बोल रहे उधर बाद में. दादल्याचे जावं बायलेचे, दादल्याच्या त्या बायलेचे, मनजाती जावं पाखराचे, सर्पाचे जावं निस्त्याचे. तू फुडें गेला गेलो. पुढे हटरा. ओके राव. पोतून वाचते 15-16 वाच. स्लो वाच. सिनाय डोंगरार उज्या ठाव सरसभर तुमचेकडे उलयलो तेन्ना तुम्ही त्याचे रूप पळोवंक ना. हा, तेन्ना उलयलो तेन्ना तुम्ही त्याचे रूप पळयला ना. तुमच्याच बऱ्याक त्या पासत भजीच्या निभान तुमकां मूर्ती रूप करून घेवू नाकात. हम्म. दादल्याक जावं बायलेचे, दादले जावन बायलेचे मूर्तीचे रूप करी नाका. मागीर 17 आय एम रिडिंग. The likeness of any beast that is on the earth. Beast is nothing but animal. आता वो डिस्क्रिप्शन दिता जे कोणाचे भितर वचना न्हू, वो डिस्क्रिप्शन दिता. जानवराचे हे कोन्नाका रूप म्हणटा. लायकनेस ऑफ एनी बीस्ट दॅट इज ऑन द अर्थ और लायकनेस ऑफ एनी विंग्ड फाउल. फाउल इज नथिंग बट अ बर्ड. That flieth in the air. The likeness of anything that creepeth on the ground. The likeness of fish that is in the waters beneath.
And lest you lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun and the moon and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all the nations under the whole heaven. वनजाती जावं पाखराचे सर्पाचे जावं नुस्त्याचे जे अंतराळ तुम्ही पळयतात सूर्या चंद्रीन आणि नखेत्रा याची पूजा सेवा करू नका. सर्व हेर देश प्रजांक सरसबरान त्या वस्तूची पूजा करून दिल्या. ये आता डिस्क्रिप्शन देता जे जे जो किसको यकीन नहीं आ रहा है या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो लिख के ले ये सब डिटेल में दे रहा है. 19 झाले पोतून होत 19 जे अंतरावयल्या ज्या अंतराळ तुम्ही पळयतात सूर्य चंद्रीन हां आणि नखेत्र हाची पूजा सेवा करू नका. सर्व हेर देश प्रजा सरसबरान त्या वस्तूची पूजा करून दिल्या. ओके पूण तुमकां त्या उज्याच्या आट्यांतली इजिप्तांतली निवारून आपली खास प्रजा पुढे गेलो करून ताणें विचून काढल्या. न पृथ्वी पर किसी पशु, न आकाश में उड़ने वाले पंखधारी किसी पक्षी, न पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी जंतु, और न पृथ्वी के जलाशयों के किसी जीव जंतु. यदि तुम आकाश की ओर अपनी आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा नक्षत्र को और आकाश मंडल के समस्त तारों को देखो, तो उनमें से प्रभावित होकर न तो उन्हें दंडवत करो और न उनकी पूजा करो. प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने इन्हें पृथ्वी पर की सब जातियों को बांट दिया है. तो यहाँ क्लियर दे रहा है. जो लोग को पहले बार नहीं समझा वो थोड़े लोग आया मेरे पास पूछने के लिए. ये डिस्क्रिप्शन सार के दिला. नॉट मेल नो फीमेल, नो इमेज ऑफ दैट मेल और फीमेल, नथिंग. जेरेमाया 43:13. Okay, I'll just read. Jeremiah 43:13 says, he shall break also the image of Bethshemesh. Bethshemesh is the house of the sun. This is very important, huh? ये house of the sun. हे ब्रदर कितने हैं? आता आहे का हे माशे हे मरे वेरी इंपॉर्टेंट सन. द सन वर्शिप ये या सूर्य का वर्शिप और पूजा अभी भी चल रहा है. ये धर्म में अभी भी चल रहा है. इन योर ओन रिलीजन आई एम टॉकिंग. ये सूर्य का वर्शिप इज स्टिल गोइंग ऑन. नेक्स्ट टाइम यू गो टू द चर्च, जस्ट हैव अ लुक. ओपन योर वाइड ओपन योर दिस. सूर्य वर्शिप इज स्टिल गोइंग ऑन. And this is called in here it is called he shall break also the images of Bethshemesh that is in the land of Egypt. कित्याक I am bringing specific church because ना जाल्यार तुम्ही म्हणटले कोंकणाचे आनी कोणाचे. हांव तेंचे उलयना, स्पेसिफीक आहा what I am talking because some of them कितें you all have become so accustomed to something. आतां भायर ब्रिटनान तेमी नागडे भोंवता ते accustomed. हिंगा येयले आमचे दोळे उक्ते जातले पूण ते भोंवतात नागडे तांकां कळचें न्हय. ते म्हणले सारखे नेस म्हणून तांकां नागडे ते सारखे न्हेसप. म्हणजे you all have come into a system where you all are coming, walking in, walking out of the house of worship, thinking it is a house of worship, and you all are not paying attention to things round about. So I am telling you, pay attention next time you go. He shall break the images of Bethshemesh that is in the land of Egypt. The houses of the gods of the Egyptians shall he burn with fire. Now, this image is nothing but column. Here, column is many religions have been this column. If you see in front of the White House, there will be one big column. Many places they use a big high. It is very high, like a skyscraper, big, like a
column. That is a god worshipping column image. And Bethshemesh is nothing but Beth-shemesh. Okay, it is called the house of the sun. The sun god in Genesis 11, in Genesis he was a hunter. From there the sun god comes from there. Till today Satan is taking worship. See, I will come in detail. So I am just giving you a brief here. When you worship something that God has not told you, demons take worship. Demons come in that place where you are worshipping. Whatever you are worshipping, it is not neutral. That place doesn't go neutral. What the devil wanted, worship. He wanted to be like God. That is why he got a kick from God and he's out. Today he is going to be in hellfire sooner. Or later he will be in hellfire. Why? He liked the things of God. He wanted to be like God. He wanted worship. So when you go in the wrong place to worship, know that you are worshipping the devil, not God. Know that there is no neutrality. He is taking worship. I will come in that way. When we go in New Testament, Saint Paul explains all that. We will see that. Now I am just giving a brief. Sun God, just remember Sun God. You see everything that figures a sun, where you go next time. See whatever worship you are doing. Sun God, everything, सब स्टार्ट होता है ये सूर्य का पूजा उधर से चालू होता है. ये सब धर्म सब इधर से चालू होता है. निमरोड म्हणून एक मनीस आलो हंटर. त्या निमरोडाच्यान ते स्टार्ट जाता सन वर्शिप. ऑल सेटन वर्शिप इज फ्रॉम द निमरोड. All the satanic worship. Today all the religions are taking from that. It comes from Babylonian worship. Sun God. You see anyway, go and see the sun. You can see anyway sun. It is not this, art and craft. Kai art and craft nasta bhitar. No coincidence. All is deliberately done. Everything is there for what it is. For a worship. Jeremiah 43:13. पढ़ो. वो मिस्र देश के सूर्य मंदिर के ये इधर किसके देश के? मिस्र, ये इजिप्ट. ये कौन क्या पूजा किसका कर रहा था? सूर्य का पूजा कर रहा था. वो मिस्र देश के सूर्य मंदिर के स्तंभों के टुकड़े टुकड़े कर देगा और मिस्र के देवताओं के मंदिर जला देगा. हाँ, मिस्र देश का मंदिर को जलाएगा. हाँ, one more thing. The word of God is saying something. My religion is saying something. What is all this? So I have been through that. So I have some knowledge about it. So it may help you to go further. See, what is the reason for the body of Christ? Is for edification, lifting up. ये body of Christ के वजह क्यों पर्पस क्या है उनका? उनको चढ़ाने के लिए, नीचे नहीं डालने के लिए. मैं यहाँ किसी का धमकी नहीं देने का आया. मैं किसी को धमकी नहीं देने आया. अगर ये प्रचार आपको धमकी दे रहा है तो आप लाइन पे आओ, क्योंकि आप लाइन पे नहीं है. ये प्रचार, ये भगवान का प्रचार आपको धमकी दे रहा है तो आप लाइन पे आओ. आप लाइन पे नहीं है. मैं किसी को धमकी नहीं देने आया. सो इफ जो मैं आई थिंक आई विल हैव दैट. मुझे जरा रिमाइंड करो. जस्ट रिमाइंड मी 5 minutes बिफोर. आई विल जस्ट another 10 minutes are there. I'll just distribute that. So anybody wants can come, but before you all, आप मुझे कॉल करने पहले मैसेज डाल, SMS या WhatsApp डालो. आप कौन है बोलो और मुझे ये चाहिए. मैं आपको ये नोट्स मैंने किया है. I have on my PC this saved. Why I am saving this? Because these notes I have not done before. So whatever I have been studying all these, I have picked up the notes. I am preparing still. वो यीशुआ का टॉपिक अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ. ये खत्म नहीं हुआ मेरा नोट्स ये टॉपिक का. सो मैं यीशुआ में मरण जो ऑल सोल्स डे आइज मरे वो भी मैं टॉपिक करेगा. हाँ, ये मागीर तू किते कैंडल घाल, अगरबत्ती घाल, किते घाल, काय फायदा ना. जब जिंदा है आदमी उसको गाली मत दे. परमेश्वर को प्रार्थना कर ये लाइन पे आने के लिए. मरने के बाद वो मैं बाद में फुल्ला घेऊन वसना का वडले गार्लंडा पहले गाई दिना का ते जिंदा. जब जिंदा है तो गालियां मत दे. बाद में उनको क्या फूलों लेके सब में मत लेके जाओ मरने के बाद. या अभी चांस है, सबको चांस है. अभी जब जिंदा है तो उनका प्रार्थना करो. बहुत चांस है. आपके प्रार्थना के वजह से वो लाइन पे आ सकता है और वो आएगा लाइन पे.
मगर वो मरने के बाद वो सब मत करो, वो नाटक, ये नाटक नहीं चलेगा, ये नाटक है, सब पैसा करने का धंधा है, ये बहुत पैसा जाता है इसमें, ये सब धर्म ये हो गया, कमर्शियल हो गया, धर्म का ये हो गया, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। आफ्टर बाइबल बोलता है क्या, मरने के बाद जजमेंट। मैं आएगा वो टॉपिक ही ये इसमें है, मैं आई विल पुट सम क्वेश्चन। ये मरने के बहुत आदमी मरा है बाइबल में और आया है वापस, वो सब देखते हैं हम जब मरने के टॉपिक में। और क्या है इसमें, कुछ नहीं होता है, मरने के बाद हो गया स्टोरी। जो करना है अभी जिंदा है तभी करो। मैं मरेगा 70 साल के या 100 साल के वो गारंटी नहीं है, अभी भी मर सकता है। ये 2 मिनट में कोई हार्ट अटैक इधर ही मर सकता है। तो मत समझा कि टाइम है मेरे पास, टाइम जाता है। अभी 10 साल भी कभी भी देखा ना, 10 वर्षापासून आम्ही 10 वर्षा फाटी आले। अभी एक पेंडेमिक हो गया, 3 साल हो गया, कैसा ऐसे ही हो गया, 2 दिन हो गया पैसा, 3 साल हो गया, अभी खत्म होने वाला है पेंडेमिक। 2 साल ऐसा ही गया, ऐसा साल जाते हैं। हमारा लाइफ में भी वैसा टाइम रुकेगा नहीं। द बेस्ट वे इज टू स्टडी योरसेल्फ, द बेस्ट वे टू स्टडी योरसेल्फ द वर्ड ऑफ गॉड। डोंट आस्क एनीबody anything. If you study the word of God for yourself, God will show you. Seek and ye shall find. You seek and you will find. God has promised you. You study the word for yourself. But थोड़े लोग इधर है क्या, उनको पढ़ने नहीं आता है, लैंग्वेज के वजह से उनको ये कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं बोलता है आप मुझे कॉल करो, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं। पेपर पढ़ने के लिए आप जाते हैं, 5 रुपया, अभी कितना हो गया पता नहीं, 10 रुपया हो गया। तो पहला 5 रुपया था, मुझे पता है। वो लाने के कौन मरा, कौन रेप किया, कौन मर्डर किया, उनका पहला जानकारी पहला चाहिए। आपको 5 रुपया देता है उधर। और ये अपने बुक अपने घर पे रहते हैं, सब डस्ट पड़ेला है, किधर है वो भी पता नहीं, किधर है वो बाइबल था उनके पास, कभी तो लाया था, किधर है पता नाही। तो हे तरी वाचा, कोणाक इच्छा ते पहिले वर्ड ऑफ गॉड तुम्हीच वाचा, तुमका कळतले देव ची होली स्पिरिट किती तुझे लेवलर येतलो। होली स्पिरिट आपका लेवल पे आएगा। होली स्पिरिट जानता है अपना लेवल किधर है, वो मेरे लेवल पे नहीं आएगा, वो तेरे लेवल से आएगा। आप किधर से चालू होता है उधर से वो आएगा जानकारी देने के लिए। तो इजिप्तातल्या सूर्याच्या मंदिराचे तो इजिप्तच्या सूर्याचे मंदिर आले इजिप्तान, सूर्याचे मंदिर अजून चालतात ते सूर्याचे मंदिर। मिनार सूर्याच्या मंदिराचे मिनार, सूर्याच्या मंदिराचे मिनार मोठलो आणि इजिप्ताच्या देवाची मंदिरा लासून उडयतलो। One more thing I wanted this, asking a thief whether this is a safe place, what the thief will tell you, it is the safest place in the world. चोरा गिचरपाक ये जगह, ये चोर को, अगर आप चोर को आया और बोला ये जगह अच्छा है सामान रखने के लिए, वो चोर क्या बोलेगा, हाँ बहुत अच्छा जगह है, ये बहुत सेफ है यहाँ। तो आप जब प्रश्न पूछता है वो गधे लोग को जो आपका धर्म में है उनको मत पूछो, बाइबल में जाको पढ़ो, वो गधे लोग को मत जाओ, समझा ना। वो बोलेगा ये बराबर है, इसलिए हम लोग इधर है, पूरा लाइफ दिया है यहाँ, मर भी रहा है यहाँ धर्म में। वो बोलेगा बराबर है, बोलेगा जब आप पढ़ रहे इधर से पढ़ो, ये ठीक से बोलेगा किधर जाने के लिए। I'll read 40-8. I am the Lord, I am the Lord. Lord का मतलब क्या है? I am यहोवा। What is यहोवा? किसको पता है? ये यहोवा का नाम का मीनिंग क्या है? यहोवा, यहोवा बोलता है इंग्लिश में, हाँ? नो, यहोवा is the father. Yeshua is Jesus. Yehovah is in English Bible they say Jehovah. Yehovah is the father. He is known by different names. Those names are nothing but he performs a task in that name. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, healer. He heals in that name. That meaning is healing. Rapha. I am the Lord. I am Yehovah. That is my name. ये name का मतलब क्या अभी देखा?
Name in Hebrew means shame. Shame, S-H-A-M-E, shame. In shame, what is meaning of shame? I am the Lord, that is my name. My name means that is my honor, that is my position, that is my authority, that is my character. His name is his character. I am Yehovah. What is Yehovah? Meaning of Yehovah? I am self-existent, eternal. I am self-existent, eternal. इनका मतलब क्या है ये नाम का? I am self-existent means मैं जो था मैंने अभी हम लोग क्यों है उसके वजह से उसने हमको बनाया है, हम है, मगर वो था उनको कुछ किसी ने नहीं बनाया. Yeah, what he said, I am Yehovah, self-existent, eternal. He is self-existent. He is not existing because of something that is above him. Why we are existing? Because of God. He is above everything. He is self-existent. So the name of Yehovah means self-existent. So now he is saying, I am Yehovah. Okay, I am reading in Hebrew. I am Yehovah. That is my name. That is my shame. That is my character. That is my authority. That is my honor. That is my position. And my glory will I not share with another, neither my praise with graven images. I will not share my glory with another, neither my praise with graven images. I will not share my glory with idols. With graven images here is idols. It is Pisel. Pisel means idols. Yeah, read. Let's see what Hindi says. पढ़ो. अभी ये सुनो हाँ, बराबर सुनो हाँ. मैं प्रभु हूँ. हाँ, ये प्रभु बोलता है यहोवा. यहोवा मतलब सेल्फ एग्जिस्टेंट. मैं था, मुझे कोई बनाया नहीं, मैं था. मैं प्रभु हूँ, यही मेरा नाम है. मैं न तो दूसरों को अपनी महिमा दूंगा. हाँ, महिमा दूसरों को नहीं दूंगा. ये महिमा नहीं दूंगा. परमेश्वर आपको अपने बेटे दिया है, अपने ये सब कुछ दिया है, संसार दिया है, मगर महिमा, ये आइडल वर्शिप महिमा दे रहे तुम लोग दूसरे भगवान को. ये महिमा परमेश्वर, ये महिमा के पास उसके साथ खेलो, तुम कला खत्म करेगा तुमको. ये महिमा उन किसी को भी नहीं देगा परमेश्वर. और न मूर्तियों को अपना स्तुति गाना. हाँ, वापस पढ़ो. स्तुति का मतलब, और न मूर्तियों को अपना स्तुति गाना, मतलब उसको ये करने का अपना ये व्हाट इज दैट स्तुति? सॉन्ग भी कोई स्तुति 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 आराधना करते हैं. हाँ, स्तुति महिमा. महिमा. ओके, वापस पढ़ो, पूरा पढ़ो. यही चैप्टर. हाँ, 42:8. मैं प्रभु हूँ, यही मेरा नाम है. मैं न तो दूसरे को अपना महिमा दूंगा. मैं न दूसरों को महिमा दूंगा. महिमा में वो महिमा किसको नहीं दूंगा? अपने बेटे को दिया, सब दिया, अपने प्यार दिया, सब दिया. महिमा नहीं देगा, ये महिमा नहीं देगा ये प्रभु. हाँ, ये महिमा के साथ तुम मत खेलो, मूर्तियों के साथ मत खेलो, ये महिमा नहीं देगा. और न मूर्तियों को अपना स्तुति गाना. हाँ, मूर्तियों का स्तुति गाना. हाँ, स्तुति गाना. गाना. हांव सरेस्पर, हांव तो हे सर्वेस्पर म्हणता यहोवा. हिब्रूचं नाव यहोवा. हांव सरेस्पर, हांव तो हांवूच. हांव तो हांवूच. मागीर दुसरे खंयचेच रत्नेक हांव म्हजी महिमा दिवचो ना. पोतून वाचते. हांव तो हांवूच. मागीर म्हजो महिमा कितें? हांव सरेस्पर, हांव तो हांवूच. दुसरे खंयचेच रत्नेक रोसना. ओके, हाँ, आता सारखे उलयले. ना हांगा रत्नेक उदा. हय, तेच आसतले रसने. ओके, हांव दुसरे खंयचेच रत्नेक हांव महिमा दिवचो ना. महिमा दिवचो ना. आनी हुंयच्या रोसणाराक महिमा दिवचो ना तो. मूर्तेक म्हजो मान दिवच्या केन्नाच कबूल आसचो ना. अरे हे सगळे हा बायबलीन आनी कितें उरलेले हा. हांव तेच तुमकां सांगता. मूर्ति, ये सब मूर्ति के बारे में ही बोल रहे हैं. मूर्ति का मान नहीं देना है.